of India, you and me and the entire nation. Right, Mr. Singh, yes, coming to you now, one point that was also raised by was that perhaps it's been a step too harsh taken by the government. One of the panelists has said that. Now, under this circumstances, what do you make of the entire situation here? What do we actually do in such a situation when there's a nation, when there are people, it's in public interest that you should call off the strike, and on the other side there are demands like these, and people resort to strike measures. मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कि आज 50 साल पहले जो सिस्टम था, आज मॉडर्न तरीके बदल गए हैं, मैनेजमेंट के तरीके बदल गए हैं, कंप्यूटर युग आ गया है, बड़ा फास्ट एक्शन की ज़रूरत होती है, हर जगह फास्ट। तो सोए रहने से और काम नहीं चलेगा, चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट भी लोग हों, और उनको आज माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और आज के हालात के मुताबिक, और उनको सोचना चाहिए, सरकार को भी देखने, जैसे अब सैलरी है, अब जैसे पहले सैलरी बहुत कम हुआ करती थी, अब ग्लोबलाइजेशन के हमें करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अच्छा मैनेजर जो है सब बाहर चल जाएंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट को भी और ये सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ मेरे विचार में कि जैसे ये मैं पहले भी कहा है बात कि ये पेट्रोल वाली जो डीजल वाली जो स्ट्राइक थी, ये बहुत ही खतरनाक स्टेप था, बड़ा ड्रास्टिक स्टेप था। तो इसको रोकने के लिए सरकार को नेगोशिएशन करके ठीक करना चाहिए था, लेकिन अगर ये रुकता ना तो मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा लॉस होता। ये जो भी, लेकिन हम वेरी सॉरी कि भी इस तरह से स्टेप करके करना पड़ा है। जैसे कई बार डॉक्टर को बड़ा सीरियस ऑपरेशन करना पड़ता है, विलिंग ना होते हुए भी वो ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऐसी मजबूरी के लिए अगर कोई ऐसा करना भी पड़ा है तो मैं समझता हूँ देश को बचा लिया है। अगर ये स्ट्राइक और ज्यादा चलती, देश का बहुत बड़ा नुकसान हो। Right, Mr. Pandey, we have few minutes left to close the show. Now we have one very strong opinion here that perhaps this was not really a step that should have been taken first of all, and if it was taken, some sorts of measures had to be taken by the government to call off, so in public interest. Your last comment on this? Public interest needs greater definition. Public interest means people's interest also. It doesn't mean the interest of just the upper middle classes or some other classes. Truckers are lifeline of the nation. They have been putting their demands from year to year. I've been seeing it, and similarly as far as public sector employees too. I think the time is that we recognize our Navratnas. It's time we recognize that India is not America. It is time we recognize that. So what's the way out? In one line, if you could just tell what's the way out? Mr. Tanya is highlighting probably there should be a mechanism, there should be negotiation, there should be a platform to discuss everything, and autonomy of some kind should be given. Frankly, an alternative system is the ultimate answer. Meanwhile, rather than tinkering with solutions, we have to have the desire to negotiate and negotiate fast before the economy bursts into a bubble. The results of the strike, unconsciously, though it is all coincidental that two strikes. Right, perhaps there should be some desire to do. Yes, one desire final to act. One The final will line to from act. you. See, my view is not that to dilly-dally. we got to modernize our mindset. This is 2009, and I think dream of each and every Indian should be this: we have to make an Indian economic superpower. Right. Then we work backward how we do that. And I think the best solution is we make all our employees, all our workers stakeholders. You make them stakeholders. I'm not saying shareholders, stakeholders. Make them involved. You know, when you are looking at the future, when you're looking at the future of the company, make them participate in the whole vision, and then you will find and treat them. It's very important. Treat them like colleagues, like your partner. Right. Then we will be building a new Right, India. I'll have to interrupt you, Mr. Sareen. One fast closing line, if you can just tell us, we'll close. मुझे ये कहना है कि स्ट्राइक्स तो एक लास्ट रिजॉर्ट रहना चाहिए, और दूसरा हमारा कंट्री जो है इसमें ऑलरेडी हॉलीडेज बहुत होती हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में हॉलीडे बहुत कम होती हैं, यहाँ तो हर हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार, कोई ना कोई आता है। इसलिए अगर स्ट्राइक्स भी हो जाए और हॉलीडेज भी हो तो इस वक्त जो हम सुपर पावर देश को बनाना चाहते हैं वो नहीं बना पाएंगे। हमें सबको ही, सरकार को भी सोचना चाहिए और पब्लिक को भी सोचना चाहिए, अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए। Right, thanks very much. It's time to close the show. Thanks very much for joining and taking part. Well, yes, absolutely. Lots of viewpoints coming in from the panelists. But the foundational principle of a liberal democracy is that my liberty ends where your nose begins.
That is the liberty of one man cannot come in the way of another. Many would agree that this is both practically, ethically correct. But is there theory applicable in the case of buns? Is a question that remains to be answered. That's all in this episode of Public Forum. Thanks very much for watching. Goodbye. Can be extremely tough. They have to go and work in the jungles of Assam. They have to go and work in remote areas of Gujarat in order to find out. And some of them are working in faraway places like Sudan, in Sakhalin, in eastern Russia. So here we are talking with the people who are giving so much to the country at the same time. So I think before we say, look, the economy was endangered because you went on a strike, it's very important to analyze at the same time. But I must add one thing here, and I think the timing was not good. This is not the time when Pakistan has created this war hysteria, when we are going through this massive recession. This is not the time, even if your demands are very genuine. If you want the country to be on your side, it's very important you choose your time well. Right, Mr. Sareen, now if we're talking about the timing of the strikes, both of them in place. Of course, they're not really interrelated, interconnected, but they've happened to be at the same time almost. In fact, the trucker strike is still continuing. It's on the 6th day, it's entering the 6th day, and the patrol one has just been called off. Now, the timing, if we just question about it, that really puts a big question mark on the entire situation and what will be the way ahead. मैं समझता हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये स्ट्राइक का, तो ये ठीक है, होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के अंदर तो मतलब इतना ड्रास्टिक स्टेप जो उठाना है, मैं समझता हूँ कि उस पर थोड़ा ज़रूर विचार होना चाहिए. और ये जो एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए इस पर, जिसमें एवरी पर्सन इज अफेक्टेड. मतलब कई स्ट्राइक होता है कि कुछ सेक्टर जो है अफेक्टेड होता है, यहाँ तो सारा कंट्री. और फिर हमारे भारत जैसा देश जिसका 110 करोड़ की पॉपुलेशन हो और छोटा 2-4 करोड़ का या 1 करोड़ का कंट्री छोटा हो, वहाँ तो कोई भी बात कंट्रोल की जा सकती है. यहाँ अगर कोई डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. मैं समझता हूँ इस वक्त पर जो सिचुएशन चल रही है, जैसे तो वो है कि मैं समझता हूँ कई बार कोई बीमार हो और किसी का हालत ख़राब भी हो जाए, तो किसी का डिफरेंसेस भी हो, तो उस टाइम पर भी कोई जरूर विचार करता है कि सिम्पैथी कि भी अगर ये ठीक हो जाए उसके बाद हम ये हिट करेंगे. इतना जरूर ख्याल आदमी कर लेता है. मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम था, ये इस वक्त इतना सीरियस देश के लिए इतना खतरा बना हुआ है कि सारी दुनिया का फोकस इस वक्त हमारा कंट्री बना हुआ है. तो ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ कि ये ड्रास्टिक जो स्टेप जो है, मेरा ये कहना जरूर है कि मैं जैसे चाइना में हम गए और वहां पर तो आप समझते हैं कि स्ट्राइक तो अमूमन आम राइट था, लोग आम स्ट्राइक करते थे. मलेशिया में आम स्ट्राइक करते थे. अब उनकी तरक्की इसलिए हुई है कि अब उन्होंने स्ट्राइक बंद कर दी. मैं समझता हूँ कि रिजेंटमेंट करने का एक तरीका है स्ट्राइक, तो उसके लिए और बड़े से बड़े तरीके ढूंढे जा सकते हैं. What will you say? My point is very clear. Listen, I would like to put my record straight. I am very clear in my mind that this timing was coincidental. Negotiations, the demand for strike was made in October. There is no doubt about that. The strike has been in the air since October. Notices were given. They were hoping for negotiations, as far as I understand this issue. As far as truck drivers are concerned, also lifeline of the nation, they're both lifeline. To accuse them of being anti-national, this national and that national in a scenario not where accusing the demands them. are pending. And you know what has happened? They're pent-up feelings. Teachers has been given a rise. Army officers' proposals have come. Even a journalist's wage board is finally in the air.